चलो अभी ये वाला सम करते हैं। दिस इज लिटिल ब्रेडी ब्रेडी। हमें क्या करना है, इवेल्युएट द फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन ऑफिस स्पॉट्स। इंट्रोडक्शन पहले तो, लिटिल ब्रेडी इज a supplier of furniture and equipment. Little Brady is listed on the local stock exchange and is subject to principles based corporate governance code. अच्छा, Littleberry is the supplier of furniture and equipment. It is listed on the stock exchange and is subject to principles based corporate governance code. Littlebredy Company's board is currently considering two major investment projects. One is an investment in facilities to manufacture office pods. The other is an investment in facilities to manufacture furniture and equipment for schools and universities. ठीक है, हमें तो ऑफिस पॉड्स का ही निकालना है, तो ऑफिस पॉड्स इन्वेस्टमेंट उसको इवैल्यूएट करना है। तो देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है पहले तो इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, अभी ए का फर्स्ट वन। The investment required for the manufacture of the office parts can be assumed to happen very soon. And the production for a full year will start almost immediately. Okay, the sales revenue and contribution figures over the investment's 4-year life are forecast to be as follows. Working notes, sales revenue, sales revenue, और 2.3। अरे अरे अरे, यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ मैं? Their contribution, कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 8 million and rise by 5% in each of the years. तो ठीक है, fixed costs which are 8 million in year one expected to rise by 5%. टू ठीक है। 5% growth, fixed costs around this comma one. The initial investment in non-current assets is expected to be 60 million. ठीक है, तो investment in non-current asset which is expected to be 60 million. A tax liable debt, अच्छा एक मिनट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब ये -60, tax liable debt of 100, a tax allowance of 100% is available immediately on this investment। क्या बात कर रहे हो भाई? The year 4 realizable value of the investment can be assumed to be 5 million and this amount will be taxable। ठीक है,
टैक्स कितना है? 20% है। उन्होंने मैंने पूरा का पूरा टैक्स अलाउंस। ये तो मैं समझा ही नहीं। और टैक्स अलाउंस ऑफ 100% इज अवेलेबल इमीडिएटली ऑन दिस इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या मतलब? मैं एसिड माइनस किया, फिर क्या टैक्स लायबल डेप ऊपर लेके फिर नीचे लिखूं, ऐसा करूं? पहले ही साल में ले लूं सारा का सारा टैक्स लायबल डेप? वर्किंग कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 10%। अभी मेरे को ये सबको तो नीचे लेके जाना ही पड़ेगा। कहता है वर्किंग कैपिटल, क्या बोला है उसने? वर्किंग कैपिटल 10% ऑफ द एक्सपेक्टेड सेल्स रेवेन्यू ऑफ दैट ईयर, एनी रिमेनिंग वर्किंग कैपिटल विल बी रिलीज एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है। पर्टिकुलर्स सेल्स रेवेन्यू। 86.4 परसेंट ऑफ सेल्स, तो ये होगा 10%। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंटल, यहाँ पे आता है माइनस दिस प्लस दिस, माइनस सम 7.78। Total working capital which is released at the end of the month, end of the year, 20% of profits of the same year, taxable profits, some contribution the key, we come down to tax. जैसे tax allowable debt losses are carried in the next year. Hmm. Tax losses must be carried forward and offset against profits from the same investment. चलो फिर टैक्सेबल प्रॉफिट्स तक तो आ गए। अभी टैक्स के लिए अलग वर्किंग नोट ही करना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स 54, पर्टिकुलर्स हो गया। फिर अभी पर्टिकुलर्स उसके बाद क्या? टैक्सेबल offsetting the losses
ठीक है, तो अभी न्यू टैक्सेबल नेट टैक्सेबल प्रॉफिट्स विच इज दिस सम, ये मैंने किया -60, ड्रैग डाउन, फिर आता है टैक्स। अभी टैक्स कितना भरना पड़ेगा मतलब मेरे को, ये तो इसको तो भूल ही जाओ। टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्सेस पेबल इन द सेम ईयर, इन द सेम ईयर एज विच द प्रॉफिट अराइजेस। तो ये दिस इंटू 0.2, 20%, दिस इज नेगेटिव में, ठीक है ना, इसको मत भूलना, दिस इज नेगेटिव में। तो ड्रैग करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे आके कैश फ्लोज, इसका लेंगे सम ऑफ इतना, कंट्रोल बी, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, सम, this into this into this, 1, तो प्रेजेंट वैल्यू से कितना आता है 11 का, फॉर्मूला शीट। 90.9, अरे यार, उतना व्हाट नॉनसेंस यार, इतना क्यों लैग करता है ये। 0.901, 0.812, 0.731, 0.659, तो आता है एनपीवी फिलहाल 14.811 का पॉजिटिव आता है एनपीवी। ओके, लेट्स चेक अभी। लेट्स चेक उनका आंसर हमारा आंसर मैच करता है कि नहीं। तो ये देखो, इनको यहाँ पे 14.9 आया है, अपने को 14.8 आया है। ठीक है, आई गेस पे बाय वैल्यूज चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू 66 विच इज करेक्ट। 12, इसे चलो जो ये चेक कर लेंगे, और एक एक करके 16, 33.9, 27, 31.3 एंड 29.9, 29.9, एक मिनट, यहाँ पे गलती, यहाँ पे गलती, यहाँ पे गलती। टैक्सेबल प्रॉफिट्स में रेसिडुअल वैल्यू, अच्छा उन्होंने वो रेसिडुअल वैल्यू 5 करके ऊपर लिखा है, मैंने 5 को नीचे लिख के टैक्स को अलग से यहाँ पे कैलकुलेट किया, देखो टैक्स अलग कैलकुलेट किया है। हाँ, तो नेट इफेक्ट तो सेम ही आएगा, ठीक है, वो ठीक है। कैश फ्लोज देख लेते हैं, 31.7, 31.62, तो वो पॉइंट डिफरेंसेस है, क्योंकि मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं, देखो मैंने यहाँ पे ऊपर थोड़ा बराबर राउंड ऑफ किया, लेकिन मैंने ये नीचे राउंड ऑफ नहीं किए, बस वही है, तो ठीक है। आई फील 18, मतलब वो एक का ही है डिफरेंस, जाने दो। अभी इवेलुएट करें तो एनपीवी इज पॉजिटिव, which indicates that the project should be undertaken. However, there are many assumptions on which NPV is based, and any change on in anyone can change the NPV and the decision. For example, the amount of working capital may increase and or it may not be recovered, which would reduce the NPV, or cost of capital may increase, also reducing the NPV. The company needs to assess the likelihood of changes to the variable before any decision is undertaken। ठीक है, बेसिकली सेंसिटिविटी एनालिसिस करनी चाहिए, ये सब हम बोल देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने, तो ये जो 7 मार्क्स मिल गए आराम से, अच्छा है। इवेल्युएट यूजिंग ब्लैक स्कॉल्स मॉडल वेदर लेटर ब्रेडी should proceed with the investment in furniture and equipment for schools and universities। ब्लैक स्कॉल्स मॉडल तो ये भी बेसिकली उनमें ही उसी में लिखना है ना। तो लिटिल ब्रेडी हैज नॉट प्रीवियसली सप्लाइड फर्नीचर इक्विपमेंट टू स्कूल्स यूनिवर्सिटीज ऑन द basis that Littlebredy is only supplying existing facilities. Calculations suggest that the proposed investment would have a negative NPV of 7 million. Oh, however, the government has just announced a major program of support for the expansion of schools and universities over the next 10 years.
If this expansion goes ahead, Littlebredy Company's finance director has forecast that demand for its product would justify the $80 million additional expenditure on manufacturing facilities in 4 years' time. The present value of the income from this investment is estimated to be 52.7. It can be assumed that all costs and revenues could include inflation. The applicable cost of capital is 11%, risk free rate is 3%. ठीक है, तो देखो रिस्क फ्री रेट इज 3% बोला है ना उन्होंने, 3% ले लिया। स्टैंडर्ड डिविएशन कितने का बोला है? 25%। तो चलो 25% भी ले लिया, अरे यार 25% भी ले लिया। अब बाकी बचे ये सारे फिगर्स। इसको देख लेते हैं जरा, एक बार फिर से एक बार देखते हैं और अच्छे से जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मेरे क्या भाई, इतना क्यों हो रहा है ये? शिट, व्हाई दिस लैग सो मच। बी का सेकेंड पार्ट ब्लैक स्कॉल्स मॉडल लगाना है, ठीक है ना। अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? करंटली देर इज अ नेगेटिव एनपीवी ऑफ 7 million. However, the government has just announced a program of support of the expansion of schools and universities over the next 10 years बोला है लेकिन गवर्नमेंट, तो हम लोग ये डिले कर रहे हैं। तो हमको कॉल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। If this expansion goes ahead, little body finance director has forecast the demand for the product। अच्छा, इसको इन 4 years टाइम बोला है इन्होंने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं बीओसपी में लाइन 4 ही ले लेता हूँ। देखो नेगेटिव 7,000 तो नहीं आएगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, अभी हमको देखना है कि कितने कैश फ्लोज हम लोग फोरगॉन कर रहे हैं, कितने कैश फ्लोज हमारे बेसिकली बन रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखो एडिशनल एक्सपेंडिचर है क्या वो, कितने का है? 80 million का। एंड व्हाट दे हैव सेड, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। सो प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द इनकम फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इज एंटाइटल्ड टू 52.7। तो ये ना एनपीवी नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनकम है। बराबर है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनकम। So this is actually your PA. This is your PA. 52.7 is your PA and the expenditure of 80 million is your PE. अरे यहाँ पे क्या 80 वैल्यूज क्यों नहीं आ रहे ऑटोमेटिकली? व्हाट 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 अगेन, मतलब ये क्या हो गया भाई? यहाँ पे डीआईवी क्यों आ रहा है? फॉर्मूला क्यों नहीं आ रहा है इसका? इसने हटाया है क्या ये फॉर्मूला? बे यार, बीएसओपी कैलकुलेटर। ठीक है ना, एक काम करते हैं अभी तो, मैं यहीं से बोल देता हूँ कि यहाँ पे 52.7 आएगा। एक बार उनका आंसर चेक कर लेते, शायद यहाँ पे इस दिन शायद मैंने अगर ये पोर्टल खोला होगा उस तभी शायद मैंने ये सारे फॉर्मूलाज डिलीट कर दिए होंगे। बट बेसिकली ये ऐसा ही है और इसमें कॉल ऑप्शंस को यूज करना है, ठीक है ना। और ये फिगर्स है, अभी देख लेते हैं ना, अगर यही फिगर्स होंगे आंसर में भी तो आई थिंक वी आर गुड टू गो अहेड। कल तुम्हें पी ए इज 52.7, PA 52.7 परफेक्ट, PE इज 80 million परफेक्ट, आर ये थी पर सी परफेक्ट है, ये सारी चीजें परफेक्ट है। तो कॉल ऑप्शन में मेरे को आया 5.11। तो 5.11 शुड बी द BSOP का आंसर। However, उन्होंने देखो नीचे क्या किया है, द ऑप्शन टू मेक अ फ्लो ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ कॉल ऑप्शन, सो अकॉर्डिंग अ फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट, द ऑप्शन टू मेक अ फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट इज द कॉल ऑप्शन। बेसिकली हम लोग डिले कर रहे हैं ना, कि गवर्नमेंट के लिए हम लोग को वेट करना पड़ रहा है, ऐसा है। सो अकॉर्डिंग टू BSOP option pricing model, the values of option to be follow on investment is approximately 5.1 million, so good। लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल वैल्यू, हमें ओवरऑल वैल्यू भी निकालनी है।
ये चीज मैं शायद मैं अभी भूल गया था। ओवरऑल वैल्यू के टाइम पे हम क्या करते हैं, फॉलो ऑन प्रोडक्ट है ना, तो पहले का जो -7 मिलियन है वो, और फॉलो ऑन में जो 5.1 का मिला है हमें वैल्यू वो, ये दोनों वैल्यूज आएंगे। और ओवरऑल हमें फिर भी नेगेटिव ही आ रहा है, -1.9 मिलियन। द इन्वेस्टमेंट स्टिल हैज अ नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू डिस्पाइट द ऑप्शन, तो शुड बी रिजेक्टेड ऑन दोज ग्राउंड्स। ठीक है ना। चलो, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया तो discuss the extent to which the investment in furniture and equipment for schools and universities would be would represent diversification for Little Birdie. Little Birdie Little Brady Company board feels that the company has been too dependent on demand from the office sector. Hence, it is looking at the investment in the furniture and equipment for schools and universities. It is also considering the production of furniture for other types of organization. The board believes that decisions it is considering now about investment policy will be important for the future direction of the company. The board does not want to disclose its plans in detail until they are certain for commercial reasons. The board does not want to disclose its plans in detail until they are certain for commercial reasons. ठीक है. Little Brady's fulfills statutory reporting regulations that complies with the requirements of its corporate governance code. अच्छा, ये मुझे लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ, वो देखो रिपोर्टिंग के ऊपर है, तो बाकी का है सबसे पहली बात तो ऐसे लिख देंगे कि डाइवर्सिफिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी विच कंपनीज नीड्स टू अप्लाई सो एज टू रिमूव द अनसिस्टमैटिक रिस्क that they currently have in the business. This method is usually dependent on the method of financing. However, still other methods for मतलब other uses can be applied. नहीं, ऐसे नहीं लिखते। ऐसे ही वो उतना ही लिखते हैं कि बेसिकली रिस्क निकालने के लिए दिस स्ट्रेटेजी इज यूज्ड। ठीक है. Hence, it is looking to invest furniture. So now, Little Birdie Company's board को feel हुआ कि they are too dependent on the office sector, which is the sector which they might have already been selling their products to. Uh, Thus, they were now looking to expand their business or looking to invest in the furniture and equipment for schools and universities. uh, what Little Birdie Company needs to understand that now that they would be supplying the furniture and equipment to schools and universities, the product should be representative of for the same sector as well. That is, now they would be providing benches and tables in the schools and universities rather than providing office cubicles या ऐसा कुछ तो हम बोल सकते हैं, chairs, etc. Um, this factor needs to be considered and needs to be applied in the process of manufacturing. नहीं, manufacturing से ज़्यादा process of making the product itself as well. ठीक है ना. This strategy might not be termed as diversification, but rather than market expanding. That is, Little Brady Company is trying to expand its market now from office sector to a completely different sector of schools and universities, which is a good strategy because of which the market base of the company is improved and company can gain greater contracts और मतलब higher contracts because of the same. ऐसा तो इसमें से कोई रिस्क विस्क नहीं है, तो इसमें कोई रिस्क कम नहीं होगा, कम ज्यादा बहुत ही कम होगा। बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ कि इतना कोई बड़ा रिस्क कम होगा ऐसा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन ये मार्केट एक्सपांडिंग के लिए बेटर है, तो वो रेवेन्यू वगैरह बढ़ सकते हैं अगर ऐसा करेंगे तो। ये देखो इन्होंने बोला मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट दे हैव सेड। हाँ, एक्चुअली मैंने सेम चीज बोली, लेकिन बस इन्होंने ये नाम नहीं दिए मैंने। Diversification has two aspects: product and market development. Product development, supplying schools and universities would represent a limited product diversification by producing some different products to what would be supplied to offices. However,
Littlebredy company would remain a supplier for furniture as it is for offices, for both schools and offices. Supply would be a combination of replacing existing furniture and equipment for current buildings, which is likely to be steady market, and supplying new furniture and equipment, either for new buildings or because of technological developments or other factors affecting what customers require. ठीक है. Market development. Market development. So supplying schools and universities is a different market from supplying offices. Supplying schools and universities is a different market from supplying offices. But how much this represents effective diversification will be determined by how much demand in these markets is influenced by some factors. To some extent, economic circumstances will determine demand in both markets. ठीक है. तो poor economic circumstances will limit new office buildings and the demand from existing offices and may also limit government tax revenues, capping the amount which can be spent on the education. तो ठीक है, ये सब बेसिकली हमने मार्केट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोल दिया, डाइवर्सिफिकेशन में वही बहुत है. मैं तो बोलता हूँ इसमें और क्या है कि ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस जो है वो इस बार पैरेलल चलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है. बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन क्यों करते हैं? वो रिस्क कम करने के लिए, और देयर शुड बी अ नेगेटिव कोरिलेशन. अभी इसमें नेगेटिव कोरिलेशन होगा नहीं होगा, इसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि तुम देखोगे तो बहुत ही प्रोडक्ट्स, मतलब इकोनॉमी तो ऑलमोस्ट सेम ही है. बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ, दे आर नॉट इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर द सेक्टर्स. However, like so can be the case कि एजुकेशन सेक्टर में डिक्लाइन आया है गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, तो ऑफिस में भी आया हो, ये भी हो सकता है. देयर कैन बी अ पॉजिटिव कोरिलेशन एज वेल. However, political imperatives here, the priority given to education will have significant impact on demand from educational institutions, with demand from office be much less likely to be affected by government policies. Other government policies, such as whether contracts are awarded on a competitive open lender basis to given given to preferred government linked suppliers, may determine how far Littlebredy can access the education sector. The upgrade of furniture and equipment for technological development is likely to be a different pace for offices and educational establishment. So it is possible that this represent effective diversification for Littlebredy company. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Advise Littlebredy company on what changes to make to its reporting to provide more information about the rationale for and the factors affecting future investment strategies. नहीं समझा मेरे को, बिल्कुल भी नहीं समझा ये क्या है. Littlebredy fulfills statutory reporting regulations and complies with the requirements of the Corporate Governance Code to produce its annual business review. ठीक है. However, it has faced investor and media criticism and the analysis and commentary on the business which it publicizes in its business review is insufficient. Recently, Littlebredy company's business review has been primarily a detailed commentary on highlighted figures from financial statements on the annual report. The main criticisms of it have been that it does not disclose clearly the business future investment strategies and discuss its results in the context of achieving its strategic objectives. Media comments suggest that lack of clear information about Littlebody strategies has been the main reason why share prices are recently falling. Absolutely right. ये एफआर का ही आंसर है. एफआर और एसबीआर का ये आंसर है. बेसिकली इसमें कैसा रहता है कि कंपनी जो है मतलब वो रिपोर्टिंग फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो इसमें कैसे करेगी अपनी कंपनी वो रिपोर्टिंग फुलफिल?
कि देखो सबसे पहली बात तो ये लिखना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिटिल बर्डी हैज टू प्रोवाइड, मतलब वो provides the reporting and regulations to a wide range of stakeholders and not just one category of stakeholders. Not all stakeholders might have the same vision. Some stakeholders or shareholders might be short. अच्छा ये मेरी मतलब वो लिस्टेड कंपनी है ना, वरना मैं जो भी बोल रहा हूँ इट डजंट मेक एनी सेंस. हाँ ठीक है, वो लिस्टेड कंपनी है. सो सम शेयर होल्डर्स माइट हैव द विजन ऑफ गेनिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, सॉरी गेनिंग शॉर्ट टर्म इनकम विद द हेल्प ऑफ मतलब वो डिविडेंड्स, और सम माइट हैव एन इंटेंशन ऑफ गेनिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज इन द शेयर वैल्यू इटसेल्फ. तो ये दो हो गए पॉइंट्स. अभी सोचो देर, हाँ देर कैन ऑल्सो बी वेरियस वैरायटी ऑफ शेयर होल्डर्स or categories of shareholders which understand and do not understand the analysis and commentary, and thus the professional analysis and commentary or the financial figure analysis and workings. Thus it is the responsibility of little body to provide reportings in such a way that can make each and every shareholder understand the value of the business, or understand the reporting aspects. ठीक है ना? That is, they can use simpler languages, provide working notes, etc, etc, etc. अभी और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में. हाँ, और हमने ये बोला है कि it does not disclose. अभी now the investors or the shareholders that are coming in the company are more interested in knowing about what the future prospects and aspects of the company are, and whether there are any opportunities or threats in the company's future or the industry as a whole, and would like to understand what is the company's and the directors मतलब वो take on it, and thus they would be deciding whether or not to invest in the company. There can be certain potential future investors, or there can be certain potential investors looking at the future of the company and thinking whether we should invest or not in the company, and thus their decision might be hampered if the company, और फिर ये कॉपी पेस्ट करेंगे ये सारे लाइंस, इज नॉट प्रोवाइडिंग. बस खत्म, इतना लिख देंगे. And thus because of which there can be a share price fall in the share prices. The current shareholders, they might also not be happy with the companies ये सब, and because of which they are removed, मतलब they are taking their shares back, or sorry selling their shares, and thus because of which there is a massive, sorry massive तो नहीं बोला, there has been a fall in the share price, ये बोल देंगे. देखते हैं इन्होंने क्या बोला है. Provision of more information. At the first stage, Little Birdie needs to communicate better with its major shareholders to find out what their requirements are. These may result in Little Birdie company producing more information than, हाँ अरे हाँ बराबर, उनके साथ कम्युनिकेट करके देखना कि भाई उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, rather than हम क्या देना चाहते हैं, राइट. These may result in Little Birdie company producing more information than legislation and the governance code require. For example, more detail about impact of government decisions about education on the demand for its products, and more performance indicators than are currently shown in its annual report and the annual business review, or the business review. It is true that commercial confidentiality may restrict the reporting of plans for, हाँ ये बोल सकते हैं भाई, ये बहुत अच्छी लाइन है. ये भाई ये एक्चुअली पूरा आंसर बहुत सही लग रहा है मेरे को, ये इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ. कि देखो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन शायद वो लोग कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से भी शायद नहीं दे रहे होंगे. बट लिटिल ब्रेडी कंपनी शुड बी एबल टू आउटलाइन द मेजर एरियाज ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द मार्केट डेवलपमेंट विच इट is pursuing to fulfill its strategies. Business review. In particular, it appears that Little Brady Company's board is taking a minimum approach, or sorry, a minimal approach to disclosure of information about its planned strategies, although it is doing enough to fulfill legislative requirements, and has produced a business review in line with the corporate governance code. The principles upon which the code is based would require the business review to be meaningful. This would mean that the business review should discuss the investment decisions which Little Brady Company has made in the context of the overall business objectives and strategies going forward. Little Brady Company may decide to produce an integrated report, meaning that, हाँ अरे यार integrated reporting, oh my god.
ये मैं नहीं भूल सकता भाई। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग प्रोड्यूस करनी चाहिए, मोस्ट बेसिक शिट, meaning that it would need to discuss how its investment strategies will deliver value over various time frames in the future. Will also need to describe the business model underpinning its investment policies. मतलब हमने जो बोला वो गलत नहीं था, लेकिन इनका आंसर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इनमें इंटीग्रेटेड मतलब वो रिपोर्टिंग कवर्ड है, फिर और क्या कवर्ड है, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो शायद ये लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। एंड थर्ड जो मेरे को मेजर चीज लगी वो थी स्टार्टिंग की, कि एग्जैक्टली उनसे कम्युनिकेट करके पूछो कि उनको क्या चाहिए। ये बहुत सही लाइन थी, बहुत सही आंसर था। गवर्नेंस कोड वगैरह पता नहीं, मेरे को तो उतना बहुत ज्यादा ये लगा, वो मुश्किल लगा मेरे को, क्लिक हो गया होगा कि नहीं पता नहीं।